yesterday what we did was, yesterday we covered all these things. Now we're gonna take it one step ahead. We're gonna start off today with list, which is another type of data, and then we're gonna discuss some functions, list functions. How can we work with list? Then we're gonna work with tuples. Then we're gonna actually go and work with functions, and then we'll understand what are return statements, what are if statements. So ये booleans आ गए यहाँ पे हमारे पास, and then comparison operators क्या होते हैं हमारे पास, and then we'll build a better calculator. That's how we'll end. We'll have a break from 4:15 till 4:30. So yeah. So like we had discussed yesterday that there are different data types in Python. So one of the data types in Python is a list. So today we're going to cover list and tuples, and we have already done strings, we have already done integers and floats. So right now we are going for strings, and also today we'll cover booleans. So this boolean, this list, and tuples. Okay. So now what you guys are seeing is basically, say we want to work with lists. So lists are basically a way of managing and then organizing data. The individual things, individual characters in the list are called as elements, and then they can be identified through their index position. And index position can be identified how, and you guys can do it simultaneously. So I want you guys to open up your PyCharm as I'm showing you this presentation. And what I want you guys to do is that, yeah, so say we create a list and we call it friends, and I say I name a friend Hassan. So whenever we are writing a string, how do we write it? We first name the string. So I named it as friends. Then we put a equal to sign on it. Then we open the string. Then we open the list. When we are working with list, the list always use block brackets. So square brackets are used in this. So we open up the square bracket. Now, if we are writing a string within it, so the strings are always written within quotation marks. Um, and if you're writing, say we are only working with numbers, so they can just be written like this. You don't necessarily have to write quotation marks. So I want you guys to write your first list. So once you write the first list, here you go. So what you will see is, so just write down the first list. You can use the same list that I've created. Friends is equals to open square bracket, then first character. You can write your own names, whatever name you like. And then what you do is that you apply this print command. But when we are applying the print command, we write print, then we open the parenthesis, and we write down the name of the variable. You guys can do it very easily on your PyCharm. What will happen then is that it will print the whole list. But say you want to only identify the person at position, index position 2. So index position, this is 0, this is 1, and this is index position 2. So what this will give you, the output that will come would be Khurram. Okay, say you are working and you want to identify the index position from not from the right side but from the left side. So from the left side starts with, so this is -1, this is -2, this is -3. So if you put in -1, it's gonna again give you Khurram in the output section. Say yes, Dr. Zishan, go ahead please. Um, so Hassan, these friends are the variable. Friends is equal to Hassan, Mahesh, Khurram. Yes, These are variables. yes. Okay. Okay. And the variable, so there are different types of variables, right? So a variable can be a string, a variable can be Yeah. numeric, and those numerics and those strings can then be arranged like a list. They can be arranged like a data frame. They can be arranged like a tuple. So parenthesis के अंदर हो सकते हैं. There are different ways of arranging it. So आज हम yesterday we learned the different, majorly two data types हैं हमारे पास Python के अंदर, which is one is either you're using a string or the other one is that you're using a numeric. Now what we are doing is that we are trying to arrange these data types into different ways. So एक उसका तरीका है list arrange करने का. Another example here is, say the same string is here and the command
that we put in. I'm basically teaching you how to apply different commands with list. First we do it here, then I'll just share this on the chat box. You guys can apply it on the PyCharm as well. You guys can apply it simultaneously on PyCharm as I'm showing it to you on the screen here. It's not very difficult. You guys can do it together. Now here what we are doing is that this is a list function as well. So we are printing the list, and in that what we are doing is that we are saying give us from position 1 till 3. So this is position 0, this is 1, this is 2. So this is going to give you Mavish and Khurram as the output. Say we want to modify the value. So within a list we have these three values, and we want to modify the value. What we'll do is that we will write down the name of index position. We'll write down the name of the variable. In after that we will tell index position, and we'll say this is equals to the new input, the new value. So we are changing. So this is 0 position, this is 1, this is 2. We are changing 1 Mavish to Danish. Basically this is what we are doing, and once we print 1 2 3, it actually showcases is going to be Danish and Khurram. So the output here will be Danish and Khurram. So this was just you guys, teaching you guys how to do it. हम list functions आगे और भी हैं. Let's just run these list functions on PyCharm. Okay, so what I'll do is I'll stop sharing this video link, and I'm just gonna share this with you guys on the chat box, so that say you want to work with it. So here you go, you guys can type it yourself as well. Here you go. So what we'll do is now you guys can see my pie chart. So I'm just gonna paste it here, and then we'll start working. So say I created, yeah, so say I created, you guys can see this, right? So um, I created a simple list, and I called it friends. You guys can call it anything you like, right? And then in that I inputted some characters, right? And then what we did was we told Python to print position 2. So this is position 0, this is 1, and this is 2. Now when I run it, look what happens. It's going to only print out Khurram. Now if I change this to say position 1 and then colon and then 1 to 2, see what it gives me. 1 second please. Okay, sorry about that. So well, basically what it's going to do is that it's going to give us between position 1, right, and everything before position 2. But if I change this 2 to 3, what happens is, and if I run it, it's going to give me both Mavish and Khurram. Now, simultaneously, what we did after this was we can also identify index position from the right side. अभी तो हम लेफ्ट साइड से काउंट करें ना, तो हसन इज 0, मैविश इज 1. सो जब हम लेफ्ट साइड से करते हैं we put in a negative sign. So I put a negative, say 2. So it's going to give me Mavish because Mavish is at -1. If we count from the right side, -1 is Khurram, -2 is Mavish, -3 is Hassan. So here you go. The output that you see here is Mavish. Now, what we're going to do is next is that we're going to modify a value. So what we'll do is that after we write this, we're going to type again friends. So ये हमें पहले से दे रहा है variable, and after that we open the block bracket, and within that block bracket we say 2. So position 2 पे इस वक्त हमारे पास है Khurram, right? And I want to change Khurram to equals to say ABCD. I just want to give, I don't call Khurram ABCD, right?
And now how what do I do is that if I print friends and I print, say I just print it, what happens is, okay, so it's giving me an error. So if I put in a block bracket and I say one, to showcase from position one to position before position three, so one and two. This is what I'm asking it to do. So what the error that we are getting here is because uh, we have modified the value, but okay. So we'll cover this अभी आगे वाली slide के अंदर how, because we are not putting in friends dot modify. Parent function वो apply कर सकते हैं यहाँ पे. So so what we'll do now is that we'll apply some other functions जिसमें हम we'll modify, we'll replace and we'll append. How we'll do that? Let me just take you back to the presentation. यहाँ पे it's giving me an error, and then we'll run it on PyCharm again. Okay. So first thing what we did was we जो अभी हमने cover किया था, what we did was that we first identified different list and हमने index position देखी, then हमने index positions को reverse में देखा, then हमने from one index position to other देखा. ये modify के अंदर ना modify का command होता है, so we'll run it through different commands. Let me show you other commands. So for example, there is this command called as extend. So say I write down a variable. मैंने एक variable create किया lucky numbers, right? And then उसमें numbers थे ये these numbers, right? 1, 2, 9, 34. And then I create another variable friends. सही है? But अब मैं क्या कर रहा हूँ? What I'm telling Python is that I want to friends dot extend, and extend includes lucky number. इसी तरह से वो modify वाली command, I'll just run it again and you guys will see. So if I print friends, it's gonna print how? It's gonna print the whole thing. So similarly, and you guys can do it just now as I'm typing this. Similarly, say we create a new list. That list is a new variable. That is basically a list. That list has some numbers. And then we create another variable. या हमारा previous variable ये जो friends है. And then we say append. When we write down append, is going to append this Zulfikar word into friends, and then you print friends. So it basically, once it prints, it's not just going to print this friend, it's going to print Zulfikar added in this. And I'm going to showcase to you how. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने क्या किया है, हमने एक्सटेंड करने में तो हमने मेंशन किया था ना लकी नंबर्स. यहाँ पे तो हम सिर्फ और सिर्फ यही लिस्ट यूज़ करें, एंड देन इन दिस लिस्ट वी आर जस्ट अपेंडिंग दिस. अपेंड का मतलब होता है ऐड कर दो, लेकिन ऐड वेयर, ऐड हेयर, राइट एट द एंड. That is what append means. Extend means, extend says add something, so add in friends right here. But add what? You have to specify you want to extend this. Similarly, there is another function called as insert function. Insert में क्या होता है कि for example say we tell Python to insert at a certain position. So वो position हमने पहले बताई, and then we tell Python what we want the Python to insert. Similarly, एक और command होती है remove command in list. In remove command, what we do is that you develop a list, and in that you say friends dot remove, and then we can remove. Say I want to remove Khurram, so I can just do that. So let me share with you guys on the so first हम करते हैं extend. So I'm sharing it in the chat box.
and I'll also open up my pie chart. और हम one by one एक एक करके सारी चीज़ें, and I'll keep sharing with you guys. For example, say I wrote down a variable, right, and that variable is a list which has numbers. Then I wrote down another variable, and that variable is basically um, strings, right? And then I extended this variable friends.extend, and then I extended it with lucky numbers. And if I print it, so this is what I get. So I get first friends because it's printing friends, but it's not printing friends alone. It's also printing the extended part of it. So say I change this and I add in another variable. So and I call this variable xyz, xyz, and say I then put in block brackets. In those block brackets, I put in some numbers, and then यहाँ पे I change the extend command के अंदर जो हमने लिखना शुरू कर देते हैं friends dot extend, and then we open parentheses. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x y z. It showcases x y z. And if I run this, it's going to showcase first friends and then x y z, right? Now this is one command. The next command that we're going to run is going to be the append command. So append के लिए simply we will be working with the friends variable. Here you go, मैंने paste कर दिया यहाँ पे. So say we have this variable, and I hope all of you can see my pie chart. So मैंने ऊपर वाला variable हटा दिया, सही है. And what I do is मैं यहाँ पे लिखता हूँ friends dot append, और append के अंदर से I add x y z. So ये आ गया append का function. So if I print friends, it's gonna add x y z right after this. But बिकॉज मैं अपेंड कर रहा हूँ तो मुझे मेंशन करना होगा कि क्या चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मैं एक स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे कोटेशन मार्क्स डालने पड़ेंगे. सो इफ आई डू दिस, यू कैन सी कि इट्स अपेंडिंग एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, इट्स एडिंग अनदर थिंग. सो यहाँ पे ये एक्स वाई जी ऐड कर रहे हैं यहाँ पे. सो दैट्स द अपेंड फंक्शन. एक और फंक्शन जो हमने डिस्कस किया था, इंसर्ट फंक्शन. सो को इंसर्ट भी मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में. And what we basically do in insert is that we will say friends dot insert. Within insert, if I do this, it gives me an error. So what I do is that I specify a specific position. At position 1, insert this. So what will it do? Look, this is position 0, right? So this was position 1, which was Mavish. It has inserted XYZ at position 1. यानी किस तरह से क्या? I just wrote down friends. नहीं, फ्रेंड्स में और इसमें इंसर्ट में फ़र्क है. जो हम एक्सटेंड करेंगे ना, एक्सटेंड के अंदर क्या है, एक पूरा वेरिएबल एक्सटेंड होता है. मतलब थिंक ऑफ इट लाइक दिस. सो इंसर्ट करने में तो ये हो रहा है, अपेंड करने के अंदर वी आर जस्ट अपेंडिंग समथिंग. अपेंड करने तो हमने सिर्फ एक चीज़ अपेंड, ये सॉरी वन हटाना होगा. बट जब हम एक्सटेंड कर रहे थे ना, एक्सटेंड के अंदर क्या होगा, हमें एक सेपरेट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ गया. तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है bug बग वेरिएबल, राइट. एंड इन दैट बग वेरिएबल ये भी लिस्ट है. बग वेरिएबल के अंदर हमने ये कुछ नंबर्स डाल दिए, राइट. एंड देन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सटेंड, एक्सटेंड के अंदर ना मुझे मेंशन करना होता है कि मैंने क्या यहाँ पे एक्सटेंड करना है. तो एक्सटेंड के अंदर मैंने यहाँ पे आई कैन एक्चुअली पुट इन अ होल वेरिएबल. सो आई अब देखिए यहाँ पे पूरा वेरिएबल आ गया. तो जब मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ ना, दैट इज़ वाई एक्सटेंड इज़ डिफरेंट, कि एक्सटेंड के अंदर एक पूरा वेरिएबल ऐड हो जाता है. लेकिन जो वो है अपना इंसर्ट कमांड है वो डिफरेंट है, अपेंड डिफरेंट है. अपेंड का मतलब है बस जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड में आगे ऐड हो जाएगा. एक्सटेंड के अंदर भी हो रहा है, पर एक्सटेंड में पूरा एक वेरिएबल आ रहा है आपके पास. फिर अगली कमांड जो हमारी थी वो थी रिमूव की. सो मैं ये भी शेयर करता हूँ आपसे चैट बॉक्स में. सो यू गाइस कैन रन दिस. There you go.
इसमें क्या है बेसिकली, अब यहाँ पे हमारे पास इसको मैंने हटा दिया, इनफैक्ट से हमारे पास एक वेरिएबल है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स डॉट रिमूव, और रिमूव पे मुझे क्या रिमूव करना है, मुझे जो भी रिमूव करना है मैंने यूँ लिख के लिख दिया हसन, आई वांट टू रिमूव हसन, राइट, and I do this. Now see what happens. Only Mavish and Khurram are left in the list. Hassan is taken out. So ये एक remove command है जो इसके अंदर हम apply कर सकते हैं. So these are some of the commands that you guys can run with list. So हमने जैसा आप लोगों से share किया है, तो we have uh, worked with पहले first just printing a list, then identifying different index positions in that list, then printing specific index positions. Then we started working with remove command, we worked with extend, we worked with insert, and then we worked with append. Now I'm going to stop sharing the IDE and I will share with you guys the presentation and then we move forward. Now अगली क्या चीज़ है, अ, अगली चीज़ हमारे पास लिस्ट फंक्शन के अंदर कुछ और कमांड्स भी होती हैं, जैसे अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने कवर किया है, so we have covered extend, we have covered append, we have covered insert, we have covered remove. इससे पहले हमने कवर किया था just index position backwards from one index position to another. Modify values के अंदर ये basically print कर रहा है एक specific position पे, हम इसको भी देखते हैं अभी जाके दोबारा से मॉडिफाई वैल्यूज़ करने का एक तरीका ये, मॉडिफाई करने का एक तरीका एक्सटेंड, एक और तरीका अपेंड, एक और तरीका इंसर्ट, एक और तरीका रिमूव. Then there are other ways in which we can modify. How do we modify? Clear. What does that do? So if you write down clear, you guys can type it, you will see what happens. So it basically clears the whole thing. So this will be basically an empty list. It's going to clear the list. Similarly, there's this other command, तो एक तो ये clear है, friends dot clear, and then you open and close parenthesis. There is this another command called as pop. Pop में क्या होता है कि it pops out the last, ये जो है ना लास्ट वाला जो आपका वो होता है ना एलिमेंट, उसको पॉप आउट कर देता है. सो इट जस्ट boots out the last, so it throws away the last, pops out the last element of the list. So pop, clear. Then there is another thing कि फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट करें, हमारे पास ये एक ना लिस्ट है, राइट. विद इन दिस लिस्ट हम जानना चाहते हैं कि हसन जो एक एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पोजीशन पे. सो रादर देन गिविंग इट इंडेक्स पोजीशन लाइक वन या whatever, मैं क्या कर रहा हूँ इस बार देखिए हमने पहले क्या किया था, हमने जब इंडेक्स पोजीशन निकाली थी हमने बेसिकली लिखा फ्रेंड्स, प्रिंट फ्रेंड्स, और फिर हमने इंडेक्स पोजीशन दे दी थी, राइट. हमें सिर्फ ये इंडेक्स पोजीशन प्रिंट करनी है. Now what we are doing is that we're going to apply the index command. Index command के अंदर basically क्या होता है, we'll write print friend star index and then we'll write down the element. So यहाँ पे element है ये. So basically इसका result आएगा zero. क्यों? Because this is at index position zero. We are asking Python to tell us what is the index position of Hassan. Okay. नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, ये एक और कमांड है जिस कमांड के अंदर है काउंट, फ्रेंड्स डॉट काउंट. इज गोना टेल अस कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन हसन. सो इज गोना बी 5. नहीं नहीं सॉरी, इट बेसिकली टेल्स अस कि फॉर एग्जांपल से हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें हमने हसन जो है ना रिपीट हो रहा है कि ये रहा हसन, एक ये रहा. सो व्हाट काउंट डज इज के इफ आई से काउंट how many times this specific element is happening, so it's gonna give me 2. Why? Because it's repeating twice. If I say count and यहाँ पे मैं लिख देता हूँ खुर्रम, so it's gonna showcase 1 because it's just coming in one time. So then उसके बाद और भी हैं लिस्ट की कुछ, but we'll first work with these. सही है. So let me stop sharing, and what I'll do is कि I'll chat box में I'll share this with you guys as well. So सबसे पहले हम कर रहे हैं clear. सही है. So we will first apply the clear command. Here you go. So I will share my IDE.
which is pie charm. There you go. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली फ्रेंड्स मैंने लिखा हुआ था, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी माई स्क्रीन एंड यू गाइज कैन सी कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ उसको, तो रिमूव किया फ्रेंड्स डॉट क्लियर, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा ना क्लियर एंड आई रन इट, अब देखिए ये एम आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, वाई ये लिस्ट एम आ रही है, वाई बिकॉज इट क्लियर्स एवरीथिंग विद इन इट, सही है। अच्छा, फिर अगली कमांड जो हमने की थी वो हमने की थी पॉप, सो व्हाट आई विल डू इज के ये कॉपी करके आई पेस्टेड हियर in the chat box. You guys can use it as well. And what I'll do is I'll just remove clear with pop p, ये आ गया यहाँ पे, खुद से मुझे options भी देता है ID. If I just write down pop and I do it, it's going to remove खुर्रम because last जो भी element होता है उसको pop out कर देता है. So देखें इसने pop out कर दिया खुर्रम का, and it showcases Hassan and Mehwish. You guys can see it here, right? Now what I do is next I will showcase you guys index, and then at index position I'm going to identify an element, so ये here you go, मैंने chat में share कर दिया, तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा friends dot index, जब मैं करूँगा तो ये ओपन करेगा पैरेंथेसिस, इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कोटेशन मार्क्स डाले बिकॉज मैं स्ट्रिंग्स के साथ काम कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंडेक्स पोजीशन ऑफ खुर्रम बता दें मुझे, राइट, एंड इफ आई डू दैट I run it, तो it tells me Khurram is at position number 2 because ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके इसको कर दूँ Mehwish and I run it, so it tells me it's at index position 1 because ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। So this is basically a simple index position वाली command. Next thing after identifying the element, the index position of the element, next thing we're gonna do count. How do we do count? Here you go. Count हम basically क्या करेंगे, we write down print French dot count, ये क्या, तो ये ओपन किया पैरेंथेसिस, उसमें मैंने लिख दिया भाई मुझे बता दें हाउ मेनी टाइम्स Mehwish is repeating, and what I'll do is I'll just add Mehwish one more time, or maybe I'll add Mehwish say 3 times. Here you go, and if I run this command, so it tells me that it's repeating twice. Oh yeah, सही, क्योंकि यहाँ spelling अलग हो गई ना. So if I run this, it's going to tell me 3 times. Because year 1, year 2, year 3. So it basically tells me what is the count, how many times Mehwish is repeating. So yeah, these are some basic level commands. We ran it on the IDE. I hope all of you are able to, I hope I'm not going very fast. If I'm going fast, you can just tell me and I'll go slow. If you want me to repeat something again, I'll repeat it again. No issues. Okay. अगला फंक्शन लिस्ट के अंदर, तो अभी तक हमने लिस्ट में क्या कवर किया है, मैं रीकैप करता जाऊंगा बार बार ताकि आप में से कोई प्रॉब्लम ना हो, सही है। सो हमने एक्सटेंड किया, हमने अपेंड किया, हमने इंसर्ट किया, हमने रिमूव किया, फिर उसके बाद हमने देखा क्लियर कैसे करते हैं, पॉप कैसे करते हैं, हमने काउंट करना सीखा, हमने इंडेक्स पोजीशन आइडेंटिफाई करना सीखी। नाउ वी गोना लर्न दिस सॉर्ट कमांड। सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी सॉर्ट इट, सो से ये हमने लिखा हुआ है हसन महविश खुर्रम हसन, राइट, एंड वी वांट टू सॉर्ट, अप्लाई द सॉर्ट कमांड, सो वी राइट डाउन फ्रेंड्स डॉट सॉर्ट। अच्छा, अब देखिए कुछ कमांड्स ऐसी नहीं कि जो डायरेक्टली हमने ना प्रिंट में कर दिया, प्रिंट के टाइम पे जैसे काउंट है, सो वी रोट डाउन प्रिंट फ्रेंड्स डॉट काउंट एंड देन वी गिव द अमाउंट। सिमिलरली यहाँ भी प्रिंट फ्रेंड स्टार इंडेक्स, लेकिन कुछ कमांड्स ऐसी हैं कि जिसके अंदर हमने सेपरेटली क्लियर किया था। Normally you can also do friends dot index and then ये, and then you can go down and then print, write down इसके नीचे print and then friends। तो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपने एक जैसे लिस्ट बनाई है,
लिस्ट के नीचे आपने पहले ये स्पेसिफिक कमांड डाल दी, इसे क्लियर की कमांड, एंड देन यू प्रिंट फ्रेंड्स। जिस तरह से आपने पहले पॉप की कमांड डाल दी एंड देन यू प्रिंट फ्रेंड्स, यहाँ भी कर सकते हैं। इंडेक्स पोजीशन पे आपने किया एंड देन यू प्रिंट फ्रेंड्स। ये ट्राई करके आप देख लीजिएगा, लेकिन अगर ना हो तो देन द वे जैसा हमने किया था कि डायरेक्टली प्रिंट कमांड के साथ हमने इंडेक्स पोजीशन जोड़ दी। काउंट के अंदर भी हम ये कर सकते हैं, फ्रेंड्स डॉट काउंट करके ये एंड देन प्रिंट, क्योंकि यहाँ पे हमें बेसिकली प्रिंट फ्रेंड्स नहीं करना, यहाँ पे हमें बेसिकली सिर्फ ये काउंट प्रिंट करना है। दैट्स वाई ये प्रिंट कमांड के अंदर काउंट आ गया। यहाँ पे क्योंकि हमें बेसिकली फ्रेंड्स ही प्रिंट करना था, हमें ये वेरिएबल ही प्रिंट करना था, इसलिए हमने प्रिंट का कमांड सेपरेट दिया। यहाँ भी हमें ये वेरिएबल प्रिंट करना है, लेकिन यहाँ पे हमें वेरिएबल प्रिंट नहीं करना, हमें यहाँ पे सिर्फ ये काउंट प्रिंट करना है। दैट्स वाई ये कमांड्स डिफरेंट है। So it's better you use it the way that I'm showing it here. Now, say I want to print friends, but I want to sort this list in a way कि it's sort out alphabetically. तो A B C D so alphabetical order में इनको sort out किया हुआ है. So पहले आने चाहिए, जैसे first word ले लें, उसको alphabetical order में arrange कर दें. So it's gonna be Hassan, followed by Hassan, followed by Khurram, and then Mehwish. राइट, अल्फ़ाबेटिकली ये होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रेंड्स डॉट सॉर्ट ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस एंड देन आई प्रिंट फ्रेंड्स, इज गोना सॉर्ट इट इन दिस वे, हसन हसन एंड देन खुरम एंड देन महविश। देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज रिवर्स। रिवर्स के अंदर क्या होता है कि ये जैसे लिखा है ना, ये रिवर्स हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे इस जगह पे मैं ऐड कर देता हूँ जुहेब, एक सिंपल एक स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ, राइट। और ये इस तरह से लिखा हुआ हसन महविश खुरम एंड जुहेब। इफ आई रिवर्स इट, इज गोना गिव आउट एन आउटपुट एज जुहेब, देन खुरम, देन महविश एंड देन हसन। तो ये रिवर्स कर देगा ये। दिस इज व्हाट द रिवर्स कमांड डज एंड देन यू कैन प्रिंट इट आउट। इसी तरह से एक और चीज़ होती है कॉपी की कमांड। कॉपी की कमांड क्या होती है बेसिकली, से यू हैव दिस say you have this variable, this list called as friends, इसमें आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, एंड देन यू क्रिएट अनदर वेरिएबल। इस दूसरा वेरिएबल जो आपने क्रिएट किया है, इसमें आपने कोई एलिमेंट्स नहीं डाले, आपने सिर्फ इसको लिखा दिस वेरिएबल इज इक्वल्स टू फ्रेंड्स डॉट कॉपी। सो यू जस्ट कॉपी द होल थिंग and then you tell Python, you know what, Python, print this. You're not printing this, you're not printing this, you're printing this. So we are printing this second variable that we created, friends to. If you print this, it's going to be the same as this. Even though Python is not printing this, Python is just printing this, but this is equal to the value of this because हमने copy का यहाँ पे किया. So those are some of the commands that we can run with list. So let me just stop sharing this and take you guys to the IDE and we can work this together. मैं यहाँ पे ना आपसे उसमें भी share कर देता हूँ chat box में, so that कि आपको problem ना हो. Say it and then let me just share the IDE with you guys. Here you go. So देखिए, जैसे for example we want to sort this, right? So I'm just gonna, I hope everyone can see my ID. So what I do is I come here and I say ये तो print command आ गया, इसके ऊपर मैं यहाँ पे कर दूँगा सबसे पहले friends dot sort and here you go. ये sort की command डाली and if I run it, it's gonna sort it किस तरह से. फर्स्ट आपके पास, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली वर्ड्स डिफरेंट है, मैंने जो वहाँ शेयर किए वर्ड्स डिफरेंट है, सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गया. सो इट टेक्स अप द फर्स्ट लेटर. तो ये एच पहले आता है, के बाद में आता है, एम बाद में आता है, एम बाद में आता है, एम बाद में आता है. सो ये इसने सॉर्ट कर दिया है, सही है. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस. नेक्स्ट वुड बी रिवर्स. सो अगर मैं यहाँ पे रिवर्स कमांड अप्लाई करूँ एंड देन आई प्रिंट फ्रेंड्स, सो यहाँ पे आया मैं एंड देन आई डू, here you go, reverse. अब ये reverse में it's not going to print like Hassan Khurram Mehwish Mehwish Mehwish. What it's going to do is that opposite हो जाएगा. So it prints Mehwish Mehwish Khurram, then Mehwish and then Hassan. Like it prints from the other side, from the right side. And then हमने एक और चीज़ की थी
which was basically copy command. So मैंने ये भी शेयर कर दिया आपके साथ chat box में. You guys can run this as well. इसमें basically हमने क्या किया है कि say I first have a variable and then I create a new variable. That variable is x, y, z, right? And then put an equal to sign. And then इस variable की value क्या है? Friends dot copy. So if I do that, and then if I print not friends but x, y, z, so you get the same result. Why do you get the same result even though Python is not printing friends? Python is printing x, y, z, because x, y, z is basically printing copy. Sometimes when you're writing code, you might require the function of the command of copy. You might require the command of other things that we covered. So I hope I'm not going very fast, and I hope this is understandable to everyone. So those are some of the commands when we are working with list. This is what we do. Okay, so now what we're going to do is that we're going to start working with tuples. Okay, tuples, हम बहुत we'll just touch upon tuples. Basically tuples जो है ना normally regularly commonly जो use होते हैं वो use होते हैं for simple commands. For example, mostly they are used for coordinates. Say you're working with geospatial data, वहाँ पे हम tuples use करते हैं. सही है. अच्छा, now what we'll do is what tuple basically is basically a type of container to store different values, just like a list. List also stores different values. It's also but similar. It's quite similar to a list. It stores pieces of information. How do we create a tuple? Um, we create a tuple by simply opening parentheses and closing parentheses, and within that, we say I create a variable and create the variable xyz equal to, and then I gave it this 1 comma 2 whatever value. This is basically in essence a tuple. Now I ask Python to print, and then I print xyz. In essence, basically this is a tuple. Tuples are normally coordinates. In tuple, one element is followed by the other element, and it's the gap is given replaced by a comma sign. So that in essence is a tuple. Now tuples have another feature. You cannot change a tuple once it's created. So once you create a tuple and then you add it into your code, then you cannot change it. Furthermore, say I have this tuple which is basically coordinates and 4 and 5, say, and I print and I tell it, you know what, print at position 1, index position 1. So this is index position 0, this is index position 1. I can apply this function in tuples as I apply it in list. Now the other is coordinates. Other tuple example is, so I write down print and then I write down print this specific variable जो एक tuple है, and then index position खोल के I write down 0 and then I put dot dot. What I'm basically telling Python is that print everything from position 0 onwards till the end. So say यहाँ पे मैं add कर देता 6, 8, 9, whatever. And so it would have printed this, all these things. So it would have printed from 4, 5, 6, 8, 9. This is what Python would have printed. So this is the command, the zero and colon command, zero colon. What basically does is that it gives everything from whichever point that you have. You can replace zero with one colon, if this is what you do, right? And in a square bracket because the index position is already. So it will take everything up from position 1 onwards. 5, 6, 8, 9. So this is what will come out.
So let's work with this. So and then okay, you can just cover it here as well. So tuples के अंदर एक और चीज़ है. For example, say I create a list. Now you can see it's a list because यहाँ block bracket इस्तेमाल हो रहा है. सही है. And in this list, I create some tuples. So each tuple is a good thing is tuples can be made part of list as well, and a list can also become part of tuples. So ये आप बाद में करेंगे. Different जब आप code लिखना शुरू करेंगे, you'll also be using it in this way. And but now what happens is that within this list, when I say zero, it's not gonna print just four or five. It's gonna print this as a whole. So this is one element, this is another element, this is another element. So let's just go to the IDE and print this out. And after that, we'll start working with functions. So let's just print out a simple tuple. So I'm just sharing with you guys in the chat box. Here you go. I'm also sharing the ID. So say I create a variable and then I name that variable as XYZ, right? Equal to sign, open close parentheses. Within that, I write 5, 90, 78, whatever. I can write anything I like. So, and then I say print. Within this print command, I say X, Y, Z. Simply. It's going to print this out. Say now what I do is that I do something else. What I do is that I change right after just writing XYZ, I can open up the index position. So here you go. Index position is opened up with the block bracket and write down 0 and then I write down colon, and then I run it. So it's gonna give me everything from position 0 to onwards. If I write down here 1 and then colon, so from 1 matlab it is gonna give me 90 and 78. Everything from index position 1, you can see it here. So what we can also do is that say we are working with a list that contains a tuple. So here you go. So I create a list. इस XYZ कोई list बना देते हैं, right? And उसमें एक tuple है, comma किया, open किया, then I say 4, comma 3, then cap छोड़ के comma किया, then I say 8, comma 1, comma 0.5, and then I close the list, right? Now, if I print XYZ and I print at position 1, it's going to take up this tuple and it's going to take up this tuple. You'll see here. देखा आपने? So it basically now what Python is thinking, Python is not considering each individual word as an element. Now Python is thinking that each element is basically the whole tuple because this tuple is enclosed in a list. So जब मैं ये print करता हूँ, it basically prints out what? It prints out the second tuple and the third tuple. Because why? Because I'm saying print from index position 1 onwards to the end. 1 colon. Here you go, I'll just copy. So that was just all about tuples. So we have done functions of list. We have done functions of tuples, and yeah, so this is where we are. Now we'll start working with functions and then return statements, if statements, and then comparison operators. And then we'll have a Kahoot
So we have 15 more minutes. I'll give you an introduction to functions. We'll start working with functions, and then what we'll do is that we'll move towards the return statements, if statements. Now, functions are very, very important in Python. Okay, whenever you're writing, so what is a function? Say, function basically tells Python, okay, look, I'm applying a specific way of writing a code. You're telling Python, look, I'm writing code in a specific way, and everything that is included in the function, right? You take it like a function. You take it in that specific way that I'm writing it. अब हम दिखाते हैं कैसे. Whenever that we are writing any function in Python, we write it with a def, def. Def basically definition से निकला है. We first thing that we do is that we define the function. सही है. We tell Python that anything that goes into the code, any code that goes inside the function is to be intended. Indented मतलब क्या होता है कि से मैंने लिखना शुरू किया def, and then I wrote down the function. For example, जैसे यहाँ पे एक function है say hi, एक function है. सो मैंने फंक्शन का नाम लिखा से अंडरस्कोर हाई. ये अंडरस्कोर ज़रूरी नहीं है डालने की, हमने यहाँ पे ऐसे ही डाला हुआ है. सो वी आर डिफाइनिंग द फंक्शन. डिफाइन किस तरह करते हैं? वी टेल पाइथन, लुक, द नेम ऑफ द फंक्शन def, नेम ऑफ द फंक्शन इज से हाई, and then we open and close parentheses, and then we put a colon sign, right? When we you put this open and close parenthesis, this is called as calling the function. Calling the function. We call the function to execute it. So first we define the function. Here you go. Then we call the function. So we write say hi, and then so we are basically calling the function, and यहाँ पे def आएगा. Defining it, then calling it, and then colon इसके बाद आता है because we want Python to execute it. नेक्स्ट थिंग, व्हाट डज दिस फंक्शन कंटेन. सही है, हमने इसको एक नाम दे दिया, हमने पाइथन को बता दिया इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करो. नाउ एवरीथिंग, वी प्रेस द एंटर साइन. यहाँ पे हम एंटर की साइन लिखेंगे. जब हम एंटर करेंगे, वी साइमल्टेनियसली ये इंडेंटेशन हो जाएगी. इंडेंटेशन का मतलब ये गैप आ जाएगा. ये थोड़ा सा गैप छोड़ के पाइथन लिखेगा. यहाँ पे जो भी कुछ हम लिखेंगे इसके बाद, इट इज़ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन. सो ये इंडेंटेशन जो होती है ना, इंडेंटेड, anything that is indented is part of the function. So say हमने लिखा, डिफाइन किया फंक्शन को ऐसे से हाई, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस किया, and then to execute the function, and then we print the function. सही है. हमारा फंक्शन बेसिकली सिर्फ एक काम करता है, इट सिंपली प्रिंट्स आउट. फंक्शंस आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. हम अभी अपने सिर्फ फंक्शन से एक चीज़ करानी, वी जस्ट आस्किंग इट टू प्रिंट इट आउट. सही है. प्रिंट आउट हेलो यूज़र, दैट्स ऑल वी वांटेड टू डू. सो हमने प्रिंट की कमांड के आगे लिखा हेलो यूज़र, एंड देन वी एग्जीक्यूट दिस फंक्शन. एग्जीक्यूट किस तरह से किया? वी कॉल द फंक्शन. इसको बोलते हैं कॉलिंग द फंक्शन. जब हम करें कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम दोबारा से नाम लिखते हैं फंक्शन का, एंड देन वी ओपन क्लोज पैरेंथेसिस. नाउ ये एग्जीक्यूट होगा. वी आर कॉलिंग द फंक्शन. इट्स गोना बेसिकली प्रिंट आउट हेलो यूजर, राइट? अब हाउ डू वी नो कि इट्स ओनली प्रिंटिंग आउट द फंक्शन? क्या पता इससे प्रिंट कमांड ले रहा हो हेलो यूजर, राइट? वेल, वी नो फॉर अ फैक्ट बिकॉज यहाँ पे अगर नीचे आए आप, तो ये एक अदर कोड हमने लिखा है, दूसरा कोड, राइट? इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट वी डिफाइन द फंक्शन. So by first stating what its name is, and then opening closing parentheses, putting the colon sign, and then we say print hello user, and then उसके बाद हम बोलते हैं print करो top, and then execute करो say hi, and then print करो bottom. So ये print कैसे करेगा? ये print करेगा top, फिर ये करेगा hello user, and फिर करेगा bottom. सो आप देखिए, फंक्शन तो यहाँ पे बन चुका था पूरा, राइट? लेकिन फिर हमने पाइथन इसको प्रिंट नहीं करा, पाइथन इसको ले रहा है, इसको एग्जीक्यूट कर रहा है.
सो पाइथन ने क्या किया, सबसे पहले पाइथन ने ये सिंपल प्रिंट कमांड प्रिंट की। ये प्रिंट कमांड क्यों इस फंक्शन का हिस्सा नहीं है, बिकॉज ये इंडेंटेड नहीं है, सही है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने प्रिंट किया टॉप, देन उसके बाद हमने फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद हमने प्रिंट किया बॉटम। तो ये हम प्रिंट कुछ भी कर सकते थे, सिर्फ दिखाने की आपको इसलिए चाह रहा हूँ कि when you're printing something, or when you're running executing any other command other than the function, it executes separately, and then function executes separately. जैसे ही फंक्शन से आया यहाँ पे आएगा टॉप, then hello user, then bottom. Let's just run this and then we will work forward, वरना functions बहुत complicate ना हो जाए. For your ease मैं ये copy paste कर रहा हूँ आपको, ये नहीं. And I will now go to my IDE, right? And सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, I create a function. So how do I create a function? I write that def, right? And def function को basically मैं बना देता हूँ say hi. That is basically what my function is named. And then what I do is I open and close parentheses, and then I put in a colon sign right after it, right? जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, देखिए खुद से इंडेंटेशन आ गई, खुद से इसने गैप छोड़ा है, मैंने नहीं छोड़ा, पाइथन ने छोड़ा, सही है. And then what I do is I'll write print and say I want to print something such as hello Hassan. This is what my function does. I want my function to print this, right? अब मैं क्या करूँगा, जब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करने के लिए I'll go back, इंडेंटेशन ख़त्म कर दूंगा, एंड देन I'll just write down say hi, ये रहा. अब मैं यहाँ पे बेसिकली से हाई को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, से हाई फंक्शन बेसिकली प्रिंट्स आउट समथिंग. सो यहाँ पे कैलकुलेटर भी पूरा एग्जीक्यूट हो सकता था, यहाँ पे एक मैडली भी पूरा एग्जीक्यूट हो सकता था, ये रहा. सो इफ आई प्रिंट दिस, इट्स गोना प्रिंट आउट हेलो हसन, सही है, because I'm just executing this function. Now, the other thing that we covered was, say we want to add other things to it. So, say I don't want it to just print out, just execute the function. I want to say other things as well. So, मैं print करता हूँ, say I want to print out Karachi. So, open close parenthesis because ये string है, and मैंने इसमें quotation mark डाली है. And then I want to print out, say, Khan. So this is how it's gonna first, यहाँ मैंने gap छोड़ा था इसलिए gap आया, वरना ये भी नहीं आता. So first it prints out this Karachi, then it executes this function. अच्छा आप देखिए फंक्शन जब लिखा होता है ना इस तरह से, आपको ये साइड में नजर भी आएगा. तो the ID is basically telling you that the function, it ये क्या है, बेसिकली हम इसको शॉर्टन भी कर सकते हैं. यू डोंट नीड टू सी द होल फंक्शन, क्योंकि जब आप थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें यू कैन हैव अ फंक्शन एंड देन यू कैन आल्सो हैव दैट फंक्शन बीइंग रिपीटेड अक्रॉस. या आपने एक फंक्शन लिखा, उसके नीचे आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, या आपने एक फंक्शन डेवलप किया शुरू में, एंड देन यू प्रिंट समथिंग आउट, और यू रन सम अदर कमांड, एंड देन यू एग्जीक्यूट द फंक्शन इन द मिडल. तो यहाँ पे देखिए मैं इन द मिडल इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ फंक्शन को. So I gave a command which was basically print Karachi, then I executed the function, then I printed something else. So I hope this gives you guys clarity. So these are, हम बहुत basic level पर functions के साथ काम करें. There are so many complex functions. आप सिर्फ Google करें, Google Python functions, you will see amazing things. You will देखिए पहली दफ़ा जब आपको लैंग्वेज इंग्लिश समझ में आई थी ना, और आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था ना, तो आपको पहली बार समझ में आया था कि व्हाट काइंड ऑफ ग्रेट थिंग्स कैन बी रिटन just by words, just in a newspaper, how many cool things can be done. Similarly, अब जब आप कोड पढ़ना शुरू होंगे ना, एंड स्पेशली फ्रॉम डे 3 ऑनवर्ड्स, आपको कोड समझ में आना शुरू हो जाएगा. कोड है क्या, ये लिखा हुआ क्या है, आपको समझ में आना होगा लिखा हुआ क्या है. दैट विल बेनिफिट यू अ लॉट बिकॉज दैट हेल्प्स यू इनटू doing so many things. अब देखिए
हमने क्या किया, वी वांट टू क्रिएट अनदर फंक्शन, राइट? पर इस दफ़ा जो हमने फंक्शन बनाया, हमने उसका जो भी नाम दिया, हमने उसके अंदर ये जो ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए। ये फंक्शन के पैरामीटर्स हैं, सही है? सो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर, दिस इज सेकंड, इट कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स, एनी पैरामीटर यू लाइक, राइट? एंड देन जब मैंने डिफाइन कर दिया, देन आई से प्रिंट, एंड देन आई से फर्स्ट हेलो, एंड देन मेरा मेरा फंक्शन बेसिकली क्या करते हैं, it prints this, and then it prints the name, सही है? So यहाँ तो एज भी मेंशन की हुई है मैंने। So what happens here is, so I'm basically telling Python that this is the name of my function. My function will have two parameters, one it will have a name, other it will have a age, and now I want to print this function. This function will say hello, and then after that it will have a name, and then plus I can also add the other parameter which is age. यहाँ पे मैंने नहीं किया हुआ, सही है? जैसे यहाँ पे इस वाले में आपको नजर आ रहा है हेलो प्लस नेम प्लस यू आर दिस एज, तो इन्होंने ये और भी स्ट्रिंग बीच में डाल दी है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ से हाई, so I execute the function. Basically say hi का मतलब है I'm executing this function, and I execute this function and I open parenthesis पे मैं लिख देता हूँ पहले मैं चाहता हूँ कि once if you are executing this function, so पहले पैरामीटर में आए माइक, दूसरे पैरामीटर के अंदर आए 90, सही है? I can call put anything here, right? I can name this as anything, पर ये सिर्फ ये कि हमने दो पैरामीटर्स डिफाइन किए और हमने उन दोनों पैरामीटर्स को यहाँ फिल किया। इसी तरह से हमने दोबारा से इसको एग्जीक्यूट किया। हम दोबारा से इस फंक्शन में लिखा, हमने इस दफ़ा लिखा असद, इस दफ़ा लिखा 87। फ़र्ज़ करें ये पेशेंट्स हैं हमारे, सो हम ये हेलो की जगह पे लिख देते हैं से पेशेंट नेम, राइट, एंड पेशेंट एज, राइट। एंड जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जब हम दिखाता हूँ मैं भी आपको, सो इट्स गोना बेसिकली प्रिंट आउट दिस माइक 90, असद 87। सो आपके अब ये पूरी की पूरी आउटपुट आना शुरू हो गई। अब जितने भी पेशेंट्स हैं, आपने फ़र्ज़ करें आप उनको लिस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ यू क्रिएट जस्ट दिस वन फंक्शन एंड देन इट्स गोना एग्जीक्यूट इट टाइम एंड अगेन, एंड से अभी तो यहाँ पे तो हम सिर्फ एक सिंपल एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना इन दो को। इट कैन बी एज कॉम्प्लेक्स एज यू लाइक। सो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखें ऑन द राइट साइड, सो वी आर again doing the same thing. यहाँ भी Mike 90, so it's gonna print out hello Mike, you are 90, या hello Asad, you are 87. So ये basically आपको we're just playing with functions here in a very simple manner. You guys can just Google stuff. You guys will find so much code online जिसमें आपको बताएगा how you can use function. But basics हर जगह पे यही हैं कि जब भी आप function लिखेंगे, you'll write def, which means you'll first define the function, then you'll write name of the function, whatever name that you want to give, then you'll open parentheses and you will give any parameter that you want to give, whatever parameters, and then you'll put a colon sign, then you'll press enter, and then you'll start writing from indentation. So you'll leave this gap here, and then once the function is over, then you can just say name whatever the function is named, and then you can open close parentheses, and then you can just use the play button. डॉक्टर हसन, ये जो इंडेंट होता है, ये सेल्फ होता है या हमें खुद करना होता है इंडेंट? ये सेल्फ होता है। यू गाइस कैन, या मैंने ऊपर आप लोगों को ये फंक्शन शेयर किया है ना, यू गाइस कैन सी माय चैट ना। सो चैट के अंदर आप लोग ये कर सकते हैं। नहीं, हाँ, तो ये किसी और ने ये डॉक्टर जीशान ने पूछा है कि द नेम इज़ नॉट इन दैट क्या कहते हैं कोटेशन मार्क्स। यस, वाई इज़ द नेम, ये जो नेम लिखा है यहाँ पे कोटेशन मार्क्स में क्यों नहीं है, डॉक्टर जीशान ने पूछा। बिकॉज ये पैरामीटर है, इट्स नॉट अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो ये होता है कि हमने जो भी यहाँ पे लिखा, हम पाइथन को सिंपली बोल रहे हैं इसको प्रिंट कर दो। यहाँ पे ऑन द अदर हैंड बोले नहीं, जो भी कुछ इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर, पहले पैरामीटर पे लिखा है वो
हमने पहले पैरामीटर को नाम दिया है, मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता था, मैं इसको एक्स वाई जी बोल सकता था, लेकिन क्योंकि ये पैरामीटर है तो पैरामीटर को हमें कोटेशन मार्क्स देने की ज़रूरत नहीं होती, हम पैरामीटर ऐसे ही लिख सकते हैं। सो फर्स्ट पैरामीटर आ गया। अच्छा, फिर अब यहाँ पे क्या करें हम, यू आर एंड देन बिकॉज हम एज जो है ना हम स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख रहे थे, क्योंकि हमने जब यहाँ पे एज लिखी थी ना तो हम एज को लिख रहे थे ब्रैकेट में, बिकॉज हमें पाइथन को बताना था कि ये स्ट्रिंग है। तो हम एक और तरीका होता है लिखने का कि आप स्ट्रिंग को लिखने के लिए कोटेशन मार्क नहीं डालें, आप क्या करते हैं, आप उसके पीछे लिखते हैं एस टी आर एंड देन यू ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड यहाँ पे आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल माइक। सो इफ आई यूज दिस is gonna basically for Python it looks like this. So for Python this and this is the same. So यहाँ पे हमने क्या किया है, बेसिकली हमने रिप्लेस कर दिया है एज को, यहाँ पे हमने विद हमने पाइथन को बताया कि एज जो है बेसिकली स्ट्रिंग है, तो हमें अब यहाँ पे कहीं वो पैरेंथेसिस डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एज दैट. सो let me just stop sharing this. ये मैंने आपसे एक फंक्शन आपके उसमें शेयर भी कर दिया चैट बॉक्स में. And let me open the IDE. जैसे बेसिकली हमने यहाँ पे सिंपली ये फंक्शन बनाया था हेलो हसन, राइट. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक नया फंक्शन बनाता हूँ, राइट. इस फंक्शन का मैं नाम रखता हूँ पेशेंट इन्फो, राइट. Open the parentheses and I say name, right, and leave a gap and I say age, I say diagnosis, whatever. Then I say test done. So then I say treatment, whatever. And then I am gonna execute it. अब इसमें obviously थोड़ा complex हो जाएगा तो परेशान मत होइएगा. And then इस function का basically एक काम है. What I want this function to do is I want this to print what? I want this to print first patient name. So I'm just gonna say patient name, and then I will add the first parameter which is name. मैं जैसे ही यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ खुद से मुझे ऑप्शन देता है. Then I will add another, and then I will say their. So इसको मैंने किया their age. और ये मैंने किस में लिखा है, मैंने लिखा है इन्वर्टेड कॉमर्स में, बिकॉज ये स्ट्रिंग है. फिर मैंने प्लस किया एंड यहाँ पे मैंने एज का वो डाल दिया पैरामीटर. फिर मैंने लिखा प्लस एंड देन आई से देयर डायग्नोसिस. ये भी मुझे इसमें लिखना होगा बिकॉज ये स्ट्रिंग है, तो इसलिए देखिए जैसे ही मैंने इसको फॉन्ट से स्ट्रिंग किया वो ग्रीन हो गया ना. तो ये आईडीज़ का फ़ायदा होता है, ये आपको सिखाते हैं कि अगर आप गलत कोड भी लिख रहे हैं तो सही कर देते हैं. एंड देन आई वांट टू से add test. So I'll just say test done. बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो जाए आप लोगों के लिए, इसलिए मैं इसको बस ख़त्म कर रहा हूँ. एंड देन I'll add in another treatment given, right, and then I will add treatment, right. And then once I do that, press enter. फिर अगली चीज़ मैं क्या करूँगा,
Now I will say I'm going to execute this. Simply execute this. So I'll just say execute patient. जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा पेशेंट इन्फो आ गया, सही है। अब फिर मैं पैरामीटर देने शुरू करूँगा। नेम में हसन, एज में मैंने कॉमा डाला, कॉमा डाल के मैंने लिखा 30, कॉमा, फिर उसके बाद मैंने लिखा डायग्नोसिस इज से डायबिटीज़, फिर उसके बाद मैंने टेस्ट एंड में लिखा है HbA1c just for A1c, then treatment given में insulin, right? So and then I execute it. It's gonna showcase the error. Why? Because ये सारे के सारे strings थे, right? And I need to cover these. चलें ये तो वो है, these strings into quotation marks. HbA1c, if I run this, okay, ये 30 को भी कर देते हैं. So it says patient, it's executing, it says patient name. ये गैप जो नहीं आ रहा ना, इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज मैंने यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी है। एज के बाद यहाँ पे छोड़ना है, यहाँ पे छोड़ना है। I just execute this. It says patient name Hassan. So patient name Hassan, their age 30, their diagnosis diabetes, test done. So अब क्या है, नेक्स्ट टाइम जब मैं इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन को रन कर रहा हूँ तो बस मैंने लिखा फंक्शन and I just have to put in the values. So the value 1 is Khurram, whatever, and then value 2 is say 30 की जगह पे I can say 50, and then I can say hypertension, and then I can say um, and BP monitoring, and treatment के अंदर I can say beta blockers, right? So if I run this, you can see okay, now it's basically इस हमें functions का फ़ायदा क्या होता है, and we'll see it time and again. हम आगे भी functions apply करेंगे in different things. So just let me just I think कोई patient किसी का mic on है, so I've muted that. Okay, so if you do that, what happens is that we are able to execute this function. So I just shared it here with you guys. ये बस कीप इट सिंपल, ऊपर वाले फंक्शन आप यूज़ करें। ये तो देखिए जितना कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें आप उतना कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, और ये तो सिर्फ प्रिंट कमांड अप्लाई कर रहे हैं ना। हम इन्हीं फंक्शंस के अंदर इफ़ स्टेटमेंट्स भी अभी अप्लाई करेंगे, हम लूप्स भी अप्लाई करेंगे। we'll work with loops tomorrow, you will see what that is. So it is going to get complex and complex and complex, and मज़े की बात यह, आप अगर अभी गूगल भी करेंगे you will find so many different functions, function for this, function for that. Just write down healthcare and write down Python and say function code. You will get different websites that will have that code. You can use that code, put in PyCharm and see what it is. This is also homework for you guys for tomorrow to do that.
Now it's 4:23. We're going to take a break for 15 minutes. And after the break, we will come back. I know ये थोड़ा exhausting हो जाता है. जब हम वापस आएंगे तो वापस आके what we will do is that we are done with functions now. So after the break, we'll start with return statements. What are return statements? Basically, इसको बोलते हैं how to return a function. सही ना? Allows Python to return the information to the user. We will learn what that is. And then we'll apply if statements, and then we'll apply comparison operators, and then we'll go for a Kahoot. After that, we'll build a very complex calculator. We're going to have fun. So, and then we'll end today. Hopefully, we are able to do it. अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, it's okay, don't be overwhelmed. ये सारी videos हम सब आपसे तो share करेंगे. So let's just take a break. So it's 4:24, right? So we will be back at 4:40. सही है? Let's just take a break. 4:40, everyone. Okay, guys. So sorry about that. So we are at 4:43. I hope all of you are here, and I hope we can start. Let me share the screen. So here you go. Now we'll start working with return statements. Um, so अभी तक हमने, let's just say that we recap bit on the functions. Functions basically क्या आते हैं? We tell Python to do a specific thing in a specific manner, and that is in essence basically what a function is. And then we can repeat the function. की अच्छी बात ये कि once we develop a specific function, then we can add in as much data or as much input into it, and then Python will run the function. तो हमने फॉर एग्जांपल कोड लिखना शुरू किया तो हमने स्टार्ट में एक फंक्शन बना दिया, एंड देन हमने यहाँ पे बीच में वही फंक्शन अप्लाई किया, फिर यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किया, यहाँ पे अप्लाई किया. So and then you will also get some pre-made functions available in Python as well if you just search on Google. Okay, so now after functions in Python, now we're going to look at return statements. Return statements basically what they do, they allow Python to return information from the function to the user. So a function is doing something, but we want that input to go back to the user. For example, say the user is using our app, it goes back to that app. So इसकी example इस तरह से है, for example say I developed a function, and the function basically does cube of a number. I can name it anything I like. मैंने यहाँ पे इसको cube name दे दिया है. What I basically want the function to do is I want it to do this. I want it to, so for example this is a num. So num, I've created a parameter. वो parameter num मैंने उसका नाम रखा है. It basically, I want function to multiply num with num with num, basically do a cube, and I apply the return statement before it. Now पहले तो मैं क्या कर रहा था, मैं फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंट स्टेटमेंट एक डाल रहा था. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिटर्न स्टेटमेंट के ज़रिए इफ़ से आई वांट द यूज़र to get some information back from the function, तो उसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमने वी प्रिंटेड दिस cube of 4, so we printed this function. So ये function को हमने यहाँ पे print किया. Print करने के अंदर हमने उसके अंदर जो value थी उस parameter की वो दी हमने 4. We can give it, so it's going to be 4 multiplied by 4 multiplied by 4. इसको लिखने का एक और तरीका ये है कि you define the function first, and then you name a parameter in it, and then you close the parentheses and then put colons. Then you apply the return command, and in the return command you tell what we want Python to return with, and then we develop another variable which is basically, we call it the result, and in that what we're doing is that this variable is equals to applying this function with 4 in the parameter, and then we print this variable which is the result. So this is just another way of doing that. So this is in a way of doing using return statements. हम बाद में आगे भी return statements use करेंगे, but in essence basically what return statements do is
they return information from the function, from this function, back to the user. That's what they in essence do. आगे जाके हम use करेंगे तो you guys will understand what it is. You guys can also learn what return statements are. You guys can just Google it. You'll get different examples, and that will also give you an idea. Um, Next, we're going to apply the return statements, but let's move forward. And then first we'll work with if statements, and then we'll apply return and if statements together. And then we have comparison operators and then Kahoot. So what is a if statement? So like I discussed, there was a type of there is a type of data called as Boolean, Boolean, Boolean. I hope I'm getting the spelling right. Probably शायद यही कह होता है इसमें. Booleans are basically हम ये research में भी इस्तेमाल करते हैं and or not. सही है. इसके अलावा ifs भी आते हैं Boolean के अंदर. If else, sorry, else if and then else. इसके अलावा Booleans का एक और है true and false. So these are basically different type of boolean. So हम actually आगे जाके आप देखेंगे हम and or not ये भी apply करेंगे, हम false, true and false भी देख रहे होंगे, हम if statements भी apply कर रहे होंगे. So let's just go about it. So for example, say हमने एक variable create किया male is male, and हमने उस variable की जो value थी boolean value थी true. सही है. और फिर हमने एक command डाली if command, and we are telling Python if is male, then print you are a male. What we are basically saying is that if this variable, अगर हम इस male को से हटा दें, if male is equals to true, सही है ना? So if male, then you print you are a male, सही है ना? So इसी तरह से say we develop another command is tall, and we develop a variable is tall. या इसको हम सिर्फ नाम देते हैं tall, सही है? And we call it true, सही है? So if we then apply the if command, we say if the person is tall, then print you are tall. Now, how will we do that? For example, जब आप इसको क्लिक करते हैं, रन करते हैं, तो you will get the answer. For example, हमने for example एक बनाया command is tall is equals to, and we'll apply this in the IDE PyCharm, and you guys will learn what it is. So don't worry about it, even if you're not understanding it right now. So say हमने बनाया variable is tall is equals to true, and then is male is equals to true, and फिर हमने उस पे if statements apply की. If is male and is tall both are true, सही है ना? हमने यहाँ पे true लिखने की जरूरत नहीं, हमने पता है कि हमने इसको value दी है true. So if this and this, then print you are male and tall. Else you can print you are either tall or male. So you just simple if statements बनाए. So let me first get out the PowerPoint. In the meanwhile, what I'll do is that I'll just share this with you. Here you go. एक if statement मैं आपके साथ share करूँ. And let's just start working with it. So I stop this, and 1 second please. So we go to PyCharm, so all of you can see PyCharm. So I'm just going to create a variable. I'm going to call it male, right? And I'm going to say male equals to true. When I write true, कुछ भी नहीं हो रहा, right? But if I write capital T, अब देखो यहाँ पे option दे रहा है boolean का, capital T से लिखते हैं true. Sorry, the moment I write true, you see that it turns orange. So basically it says that it's a specific command. Python के अंदर जब भी हम कोई command लिखते हैं वो orange बन जाती है, कोई string लिखते हैं वो green बन जाता है, जब हम apply कर रहे होते PyCharm use कर रहे होते हैं.
And then what we do is that we say, well, if, अब हमने if command की तो ये if आ गया option यहाँ पे if, अब क्योंकि ये command है तो देखिए orange से लिखा हुआ है if male, सही है, if that is the case then अब जब मैं enter करूँगा तो खुद ब खुद indentation होगी. Anything that happens after the indentation, it basically is part of this, सही है. So now what I say, I write down print and says subject is male, say, and I execute it. Okay. Uh, oh yeah, हमने ना कोलन नहीं डाला. हम जब भी if command लिखते हैं ना, हाँ yeah. So आप जब भी if command लिखते हैं तो आपने लिखा if and then you put in say a variable and then you have to put in the colon to run it. So here you go. Subject is a male. सही है. Now अब देखें मैं क्या करता हूँ, मैं इस boolean को जो है ना इसको कर देता हूँ false. अब क्या होगा? Nothing. सही है ना. अब ये देखें अगर यहाँ पे मैंने नीचे लिखा say else print subject is not क्योंकि हमने एक वो लिखना लाइन लिखनी तो subject is not male, right, and then we execute it. Because मैंने यहाँ पे false mention कर दिया है, मैंने male को value दी है false की, so we are saying that this person is not a male, therefore जब हमने if statement apply की, so if the person was male then only it would have printed subject is male, else in every other condition is gonna print subject is not male. I can replace male with, let me just share it here with you guys. If statements की application आप लोगों को सिखा रहा हूँ, so I can share other things from the presentation as well. थोड़ा complex बनाते हैं इसको, ये नहीं. Here you go, मैंने ना chat box में आपसे वो भी share कर दिया. So for example say हमने क्या किया, हमने बोला कि male को male is equals to capital true TRU, and then हमने लिखा male के बाद next Pakistani. We created this and then we say true as well, right? If male, and then उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा and को देखें ये read कर रहा है यहाँ पे, and not को भी देखें ये pick कर रहा है, जो orange से आ रहा है इसका मतलब ये boolean pick कर रहा है, and not Pakistani, ये variable है. Then let's create this. सबसे पहले हमने बोला if male and Pakistani, तो ये दोनों का होना जरूरी है, right? So we say print subject is male and Pakistani. सही है. Now दूसरा हमने बनाया if male and not Pakistani, we'll say subject is male and not Pakistani. लेकिन क्योंकि हम पहले ऊपर मेंशन कर चुके ना if, तो अब हम यहाँ लिखेंगे else if. Else and then यहाँ पे आएगा else if. ये else if को शायद इसलिए पिक नहीं कर रहा कि शायद एल इफ होता है, सॉरी, वो else if को लिखते हैं एल इफ. Else if patient is male and not Pakistani, so you'll say the subject is male and not Pakistani. We can also write other else if commands as well. For example, elif
Pakistani and not male, print, हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया से subject is Pakistani and not male. सही है। तो एक तो हमने बना दिया कि वो मेल और पाकिस्तानी है, दूसरा हमने एल सिर्फ मेल है बट नॉट पाकिस्तानी, देन हमने बोला पाकिस्तानी एंड नॉट मेल, एंड सब्जेक्ट इज नीदर कर देते हैं इसको। सही है। लास्ट वाला एल्स इन केस नन ऑफ दीज अप्लाई। अब देखें अब क्या है, लेट मी रन दिस कमांड। सो बिकॉज I've given the value of male as true and the value of Pakistani as true, जब मैंने यहाँ पे लिखा इफ द पर्सन इज मेल एंड पाकिस्तानी, तो ये प्रिंट कर रहा है सब्जेक्ट इज मेल एंड पाकिस्तानी, यहाँ पे शो है। अब देखिए व्हाट आई विल डू इज आई विल चेंज मेल टू फॉल्स, व्हाट इट, एंड आई विल रन द कोड। इफ आई रन द कोड इट सेज सब्जेक्ट इज पाकिस्तानी एंड नॉट मेल, बिकॉज मैंने यहाँ पे मेंशन किया था एल्स इफ द सब्जेक्ट इज पाकिस्तानी एंड नॉट मेल। देखिए एंड और नॉट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ विच आर ऑल्सो बुलियंस, इफ एंड एल्स इफ इस्तेमाल हुआ, ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे इस्तेमाल। तो इफ स्टेटमेंट्स आर यूज्ड हैंड इन हैंड with and or not and true and false. True and false are also boolean. अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को false कर देता हूँ, see what happens. False, right? And I run this. It's gonna say subject is neither, and I can say neither Pakistani nor male. I run it. Here you go. यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ कि say, अभी तो मैंने मेल को फॉल्स किया हुआ है ना, सो आई कैन से पाकिस्तानी एज ट्रू, कैपिटल ट्रू, कैपिटल टी, and I run it. Look, subject is Pakistani and not male. So कैसे आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे पाकिस्तानी को ट्रू किया और यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है इफ स्टेटमेंट्स के अंदर। सबसे पहले तो देखें, सबसे पहले हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए, राइट, एंड इन वेरिएबल्स को जो हमने वैल्यूज असाइन किए वो हमने बुलियन वैल्यूज असाइन की, ट्रू एंड फॉल्स। Then what we did was then we started applying if statements. If, else, else if is written as elif, and then else statements. जब भी कभी आप else if statement लिखते हैं एंड में कोलॉन आता है एग्जीक्यूट करने के लिए, कोलॉन आता है एग्जीक्यूट करने के लिए एंड में, ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स मीन्स ये पाइथन की ग्रामर है, सही है। एंड देन विद दैट हमने एंड यूज़ किया। एंड का मतलब ये होता है कि ये और ये दोनों होना ज़रूरी है, सही है। और का मतलब होता है, ये देखें, और मीन्स कि इधर मेल हो और पाकिस्तानी हो, अगर कोई भी होगा ना, तो फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे कर देते हैं एंड की जगह पे, यहाँ पे एंड है ना, पहले तो मैं ये आपसे शेयर कर दूँ चैट बॉक्स में, ताकि बाद में अगर मैं कुछ चेंजेस करूँ तो आपको समझ में आए। आई होप आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान सब्जेक्ट इज़ मेल एंड नॉट पाकिस्तानी, तो यहाँ पे नॉट आ गया, सही है। सब्जेक्ट इज मेल पाकिस्तानी एंड नॉट मेल आ गया। अब फर्स्ट करें, मैं सिर्फ चाहता कि एक तरफ मैं ये बताना चाहता था कि सब्जेक्ट इफ द सब्जेक्ट इज मेल एंड पाकिस्तानी, राइट, पर अगर मैं यहाँ पे लिखता और पाकिस्तानी, और का मतलब होता है कि इन दोनों में से कोई भी चीज़ ट्रू होगी ना तो वो ये शो कर देगा। किस तरह से, ये देखें अब क्या होगा, ये शो करेगा यहाँ पे सब्जेक्ट इज मेल एंड पाकिस्तानी। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी एक ट्रू हो गया तो फौरन से उसने ये स्टेटमेंट दे दी, सब्जेक्ट इज मेल एंड पाकिस्तानी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंड रखता हूँ तो इन दोनों का होना ज़रूरी है, बोथ ऑफ दीज वेरिएबल्स हैव टू बी ट्रू, सही है। तो ये इसको मिस आउट कर देगा, तो ये फॉरन से इसको मिस आउट करेगा तो नीचे जाएगा, ये देखेगा ये मैच हो रहा है एल्सिफ वाला, पाकिस्तानी एंड नॉट मेल नहीं, ये भी नहीं हो रहा, तो ये और नीचे आएगा, ये मैच हो रहा है कि पाकिस्तानी ट्रू है एंड मेल फॉल्स है, तो ये मैच हो रहा है, तो ये कर देगा। So this is a way in which we use if statements, else if statements, and we use true and we use false, we use and not. So मैं chat में भी लिख देता हूँ, देखिए एक चीज़ है and और and not, एक तो ये चीज़ है जो boolean के साथ यूज़ होते हैं। फिर true with a capital T and false with a capital F, फिर उसके बाद if, if
else if की command है, and else. These are basically commands. So if, if, the else if and then else statements, they are basically used with booleans, true and false, and then booleans में आता है and or not, जैसे हमने यहाँ पे देखा है, हमने apply करके आपको दिखाया. So you guys can play with this as much as you like. So for example, say uh, you can change, replace Pakistani with say hypertensive, right? So फिर यहाँ पे सही जगह पे मैं पाकिस्तानी को मुझे हाइपरटेंसिव करना पड़ेगा. यहाँ भी पाकिस्तानी को हाइपरटेंसिव करना होगा. सही है. और ऑब्वियसली फिर जो मैं बता रहा हूँ उसको भी मुझे हाइपरटेंसिव करना होगा. बहुत ही सिंपल मैं वो कर रहा हूँ. ये देखें, and I run this code. So subject is hypertensive and not male because हमने male को तो false रखा है, but hypertensive को true रखा है. So I'll just copy this and share with you guys. So basically, else if statements can apply in a lot of things, a lot of places. So let's stop sharing here and go back to the presentation. अभी हमने presentation पे if statements देखी नहीं. So let me showcase to you guys. So हमने basically एक वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू दी ट्रू या फॉल्स. उसके बाद हमने उससे एक एसोसिएट की कमांड. अब लेकिन कमांड एसोसिएट करने से पहले पहले हमने इफ़ या फिर हमने एल इफ़ या फिर हमने एल्स यूज़ किया, एंड देन फिर उसके बाद हमने प्रिंट की कमांड अप्लाई की कि अगर ये होगा तो ये करो, ये होगा तो ये करो. एंड देन हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किया इफ़ एल्स, एंड देन आगे जाके जैसे यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया इफ़ एल इफ़ and else. You guys can apply this as well. ये मैं share कर देता हूँ आपसे. So, here you go. अगर आपको इस तरह से अच्छा लगे तो you guys can make your own if statements as well. ये मैंने chat में share कर दिया आपसे. Basically हो क्या रहा है यहाँ पे, for you guys I'll repeat it again. The reason why I like to repeat again and again because I know that the first time I was doing all of this I was hell confused. So it's okay if you are confused. Just understand that there's something called as booleans, which include true, false. Booleans also include and. लेकिन and को Python में हम simply and ऐसे लिखते हैं, or not. फिर इसके अलावा they are these things, these booleans, they are mostly used with if, else, if, or else in Python. सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया टॉल, हमने उसको बोला ट्रू, हमने किया मेल, उसको हमने असाइन कर दिया फॉल्स. हम इसको ट्रू भी असाइन कर सकते हैं. यू कैन चेंज इट एज व्हाटएवर यू लाइक, राइट. फिर हमने पहली स्टेटमेंट क्रिएट की इफ़ द पर्सन इज टॉल एंड इज एंड, ये अगेन एक वो आ गया क्या कहते हैं बुलियन एंड मेल. देन प्रिंट योर मेल एंड टॉल. Else if the person is male and not tall, then you will print you are male and not tall. Else if the person, अब यहाँ पे ये and आ गया, not आ गया, booleans आ गए, ये भी and है. फिर इसी तरह से person is tall, तो elif ये भी आ रहा है, तो else साथ साथ यूज हो रहे हैं, and not male. So यहाँ पे ये जो ये ब्रैकेट में लिखा है ना इज मेल, इसको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर ये वेरिएबल है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था. And then so you print you are tall and not male, and then else print you are neither. So I hope you guys understand what if statements are. हमने return statements भी देखी थी. Return statements भी ना मैं एक दफ़ा आपको IDE पे करके दिखा दूँ so that you guys understand what that is.
सो ये लें. सो रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली हमने क्या किया, लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट द रिटर्न स्टेटमेंट. And I'm sharing it in the chat as well. Here you go. आईडी लिया. आईडी के ऊपर ये मैं रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ. ये देखिए हम. सो हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, उस फंक्शन का नाम रख दिया हमने क्यू. हम उसका नाम कुछ भी रख सकते थे. हम उसका नाम रख सकते थे वी व्हाटएवर. लेकिन जो भी हम नाम यहाँ रखेंगे, जैसी बात है, जब हम रिजल्ट्स बनाएंगे तो हम वी करके हम. सही है, ये आ गया. अब ये जो हमने इसमें नाम लिखा है ना, नाम इज एक्चुअली रिकग्नाइज्ड बाय पाइथन. सो जब हम एक पैरामीटर देते हैं ना, पैरामीटर जैसे मैंने यहाँ पे एन लिखा, सही है. सो मैं यहाँ पे पैरामीटर को चेंज करने के लिए कुछ और लिखूंगा तो ये रीड नहीं करेगा. सो यहाँ पे इसको न्यू कर दिया. सो बेसिकली पैरामीटर को हमने नाम दिया, नाम की जगह न्यू कर दिया हमने व्हाटएवर. और हमने एक फंक्शन क्रिएट किया डेफ. उसका हमने सबसे पहले एक नाम दिया, फिर उसका पहला पैरामीटर क्रिएट किया, और पैरामीटर को हमने मल्टीप्लाई किया विद इट थ्राइस. लेकिन इस जब हमने क्या किया, हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ की. रिटर्न स्टेटमेंट्स क्या करती हैं, इस फंक्शन को ये परफॉर्म करा के एंड दे ब्रिंग द रिजल्ट बैक. सही है, दे ब्रिंग द रिजल्ट बैक टू द यूज़र विच इज़ अस. सो रिजल्ट, फिर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया रिजल्ट के नाम से, जिसके अंदर हमने बेसिकली बोला कि वी वांट द क्यूब ऑफ 4, क्यूब ऑफ दिस वेरिएबल. And then we printed, and this is what we get. We get 64. We can replace 4 with, say, 10, and we execute it. So we get 1000. So return statements, they basically, और फिर हम आगे जैसे यूज़ करेंगे, you guys can also check it out online. रिटर्न स्टेटमेंट्स के और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. हम बेसिक लेवल पे रखना चाह रहे हैं तो इसके अंदर हम इतना इन डेप्थ अभी नहीं जा रहे, इसलिए. So let me share the presentation again. Let's go back to the presentation. So after the if and return statements, the next thing that we have is comparison operators. So what is a comparison operator? Comparison operators are basically, and sorry if I'm going fast, I'll try to recap everything at the end as well. And I'll try to finish today's session at like 5:30 or maybe 5:45, so that you guys can get time to revise what we have done up till now. अगर आज जो हमने किया आपने नहीं revise किया, कल आपको बहुत problem होगी. So I really want you guys to go back and then revise all of this. These are basically very simple commands that you have to do and apply. Okay, so comparison operator basically क्या करते हैं? Comparison operator basically does few things. Say I want to compare one thing with another. So for example, say यहाँ पे आप example देख सकते हैं, created a function, because यहाँ पर नजर है def, right? And then मैंने उसको एक नाम दे दिया maximum number या biggest number, whatever. फिर मैंने पहला पैरामीटर क्रिएट किया, उसका मैंने नाम दिया num1. दूसरा पैरामीटर क्रिएट किया, उसका नाम दिया num2. तीसरा पैरामीटर क्रिएट किया, नाम दिया num3. सो num1, num2, num3 क्लोज किया ये पैरामीटर को, एंड देन कोलॉन अप्लाई किया, सो दैट के फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कर सकें. अब इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने इफ स्टेटमेंट अप्लाई की. इफ द पैरामीटर ऑन द फर्स्ट वन, पैरामीटर 1 इज ग्रेटर देन, ये जो साइन है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन है. सो इफ इट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पैरामीटर 2 एंड, यहाँ पे अब ये बुलियन आ गया, एंड पैरामीटर 3. सही है. And if this parameter 1 is greater than and equal to parameter 3, then you bring back to us parameter number 1. सही है. यहाँ पे पैरामीटर मतलब कि ये जो चीज़ है, ये 1 है, ये पैरामीटर 2 है, ये पैरामीटर 3 है. Okay, so if that is not the case, else if parameter number 2 is greater than and equal to parameter number 1, and
At the same time, if parameter number 2 is greater than parameter number 3, then return to us parameter number 2. Else, in case neither parameter 1 nor parameter 2 is greater than parameter 3, then return parameter 3. So return means you show this as the result. So, and then we print this function called as maximum number, and in that we put in parameter numbers. So पहले parameter पे हम देते हैं 12, दूसरे पे 45, तीसरे पे 98, and then we execute it. Once we execute it, it's going to showcase whichever parameter is the highest. So say यहाँ पे अभी पैरामीटर 3, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एल्स वाले को अप्लाई करेगा, पैरामीटर 3 हमें आउटपुट के अंदर पैरामीटर 3 नजर आएगा. So let's just go to the IDE and run it. Okay. ये मैं क्या कर रहा हूँ, I'm just gonna share it with you guys in the chat. Here you go. Right now what I'm going to do is that I'm going to stop sharing the PowerPoint, start sharing the IDE, and say we create a new function. So yeah, and this function I call it def big number. मैं कुछ भी नाम दे दूँ मेरी मर्जी. सही है. And then I open parentheses and I say, I'm just going to keep it simple. So I'm just going to say A, comma, B, comma, C, right? ये पैरामीटर्स दे दी और मैंने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये कोलन की साइन लगाई, एंटर किया, एंड देन आई से वेल इफ राइट A and I leave a gap, A is greater than and equal to. सही है. ग्रेटर देन की साइन आपको मिल जाएगी अपने किस में से, आपको मिल जाएगी फ्रॉम योर कीबोर्ड. सही है. It's right beside question mark and shift. सही है. Is greater than this, then if A is greater than B, और यहाँ पे शो हो रहा है B, and यहाँ पे मैंने एक और boolean ऐड किया, and A is greater than C, यहाँ पे C वेरिएबल के तौर पे शो हो रहा है, पैरामीटर के तौर पे शो हो रहा है. In that case, I say return 1. You should return A. Then I'll enter this, and then I'll say else if B is greater than and equal to A, and at the same time B is greater than and equal to C, then return B. Press enter. In case neither A nor B, else say what you do, else you return C, right? एक प्रॉब्लम है बस, बिकॉज ये तो सही है. यहाँ पे जो हमने लिखा था ना, हमें यहाँ कोलॉन ऐड करना होगा. यहाँ भी हर इफ स्टेटमेंट के साथ कोलॉन ऐड होता है. रिमेंबर दिस. अब देखें, लास्ट फर्स्ट वी टॉट यू व्हाट फंक्शंस आर, राइट. वी आल्सो टॉट यू हाउ फंक्शंस मूव. पहले हमने सिंपल एक प्रिंट कमांड की फंक्शंस में, फिर उसके बाद अब हम क्या करें, इफ स्टेटमेंट्स भी अप्लाई करें फंक्शन में, और साथ में हम वो भी कर रहे हैं एंड और नॉट, और साथ में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी सब अप्लाई करें. ये हो गया. अब मैं चाहूँगा ये फंक्शन पूरा हो गया ना, अब मैं बैक करूँगा. अब मैं फंक्शन ख़त्म कर दिया. अब मैं क्या करूँगा, बोलूँगा प्रिंट. अब वैल्यू के अंदर मैं ये फंक्शन ऐड करूँगा बिग नंबर. अब इसमें पहला मैं करूँगा 1, दूसरा करूँगा 90, तीसरा करूँगा 3 से, एंड मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ.
if I execute it, because ये मैं चाहता हूँ biggest number मेरे पास यहाँ पे show हो, तो of all of these it's showing this function is giving me 90. Why? Because 90 is the biggest number. And देखो रिटर्न का मतलब ये हुआ कि मैंने इनको बोला कि सिर्फ मुझे वो दिखाना, मुझे वो रिटर्न करना सिर्फ कि जो मुझे इफ़ दिस अप्लाइज ओनली देन रिटर्न इट, इफ़ दिस अप्लाइज देन ओनली देन रिटर्न दिस, एल्स रिटर्न दिस. Return का मतलब ये just show this as the result and I don't want to see anything else. That's what it is. So I'll just copy paste this for you guys. And मैं chat box में कर रहा हूँ. It's okay if you guys cannot write the code like I'm writing it right now. थोड़ी practice पे आप सबको भी आ जाएगा. ये कोई rocket science नहीं है. It's very easy. This basically brings us to the conclusion of comparison operators, if statements and functions. अब आप ये देखें ना, इसी कोड के अंदर हमने एक कोड के अंदर functions अप्लाई किए, उसी कोड के अंदर हमने if statements भी अप्लाई किए और उसी कोड के अंदर हमने comparison operators भी अप्लाई किए. And you guys can change this. For example, if say PP is यहाँ पे say हम कहते हैं BP कट ऑफ, हम एक वो बना दें ऑपरेटर, एक फंक्शन बना दें, राइट. सो BP कट ऑफ के अंदर हम इफ ए इज से और BP के अंदर हम दो पैरामीटर्स रख दें, सही है. सो एक ये हो गया, इसको नाम रख देते हैं हम सिस्टोलिक, इसको रख देते हैं हम डायस्टोलिक, सही है. And then what I do is I say if systolic is equal to or greater than 140 and diastolic is equal to and greater than 90, return यहाँ पे in this case हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे. मसला है कि अगर मैं सिस्टोलिक को रिटर्न करूँगा तो यहाँ पे रिटर्न नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आएगा प्रिंट हाई BP, बिकॉज ये एक स्ट्रिंग है तो मैंने यहाँ पे लिख के, सही है. फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ एल्स, इन केस दैट इज़ नॉट द केस, देन प्रिंट नॉर्मल BP. जस्ट आइडिया के लिए दिख रहा हूँ आपको, सही है. एंड यहाँ पे मैं पैरामीटर्स चेंज कर देता हूँ. सबसे पहले तो इसको चेंज करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ BP कट ऑफ, ये आ गया. पहले पैरामीटर जो मैं रखता हूँ सिस्टोलिक का, उसको रखता हूँ मैं 130, दूसरा वाला मैं रखता हूँ 80. अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये शो करे नॉर्मल BP, राइट, बिकॉज ये लेस देन दैट. पर अगर मैं इसको लिखता हूँ से 150, सही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है, राइट, अगर मैं इसको और कर दूँ तो क्या होगा, ये देखें, ये शो करेगा हाई BP. पर अगर मैं इसको कर दूंगा एंड, तभी शो करेगा नॉर्मल BP. So just an idea to showcase you guys what this is. ये copy करके, let me just paste it here. सही है. Return statements. Thank you for that question, Dr. Amar. So why have we changed print to return? Well, because here we are not printing anything. मतलब जब हम ये कर रहे थे, big number जब हम ढूंढ रहे थे, तो we are basically not printing that number. What we were doing was we were just returning this. So we are telling Python, you know what, return either A
return either B, return either C. Um, and if you return that, it means that result becomes this function. And we want, then we told Python to print this function. तो प्रॉब्लम ये है, अभी हमने प्रिंट इसलिए किया है बिकॉज हमारा जो अगर मैं वो करता रिटर्न करता तो मैं रिटर्न सिर्फ पैरामीटर रिटर्न कर सकता हूँ, राइट? रिटर्न की प्रॉब्लम ये होती है उसमें मैं कोई स्टेटमेंट नहीं रिटर्न कर सकता, पर क्योंकि मुझे तो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट देनी थी बीपी के अंदर ना, मतलब जैसे बीपी वाली ये आ गया, अब बीपी के अंदर मुझे एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट देनी थी, मतलब मुझे स्पेसिफिकली बताना था हाई बीपी लो, अब हाई बीपी मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, तो इसलिए मुझे यहाँ पे प्रिंट का इस्तेमाल करना पड़ा. सो बेस्ड ऑन व्हाट यू आर वर्किंग ऑन पाइथन, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ कोड दैट यू आर राइटिंग, सो आप उसके अंदर ही अप्लाई करते हैं. तो जस्ट मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दी आपको, but you can apply these comparison operators in so many different ways. Like यहाँ पे आपने बोला ना कट ऑफ, ये मशीन लर्निंग के अंदर अप्लाई होते हैं. ये once we are say you are developing a protocol based treatment for your patients, right? And वो algorithm जो आपने लिखा है उस algorithm के अंदर आपने comparison operators apply किया as a cut off for say diabetic patients. So वो सब यहाँ पे apply हो सकता है, stuff like that. I hope this answers your question. Um, let me stop sharing this. And then let me go back to the presentation. Woohoo. अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं भाई, हमने क्या किया आज, हमने ठीक ठाक चीज़ें कवर की, हमने लिस्ट किए, हमने टपल्स किए, हमने फंक्शंस देखे, फिर हमने फंक्शंस के बाद रिटर्न एंड इफ स्टेटमेंट देखे, देन हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देखे. अब नाउ वी विल प्ले दिस गेम काहूट एंड देन वी विल बिल्ड अ बेटर कैलकुलेटर. सो the runner-ups are Z and Vasi, so congratulations to you guys as well. I hope you guys have fun. So a lot of you got this right. हम आपके stats भी maintain करते हैं यहाँ पे, कितने actually हम जो सिखा रहे हैं वो वाकई में लोगों को समझ भी आ रहा है कि नहीं. So thank you for that, guys. Okay, so let me take you back to the presentation. अब आएगा मज़ा. अब हम क्या करेंगे? Now we're gonna create a more complex calculator. अब हम जो कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे ना, ये कैलकुलेटर में हम ब्लैक नहीं कर रहा है, ये मैंने कर दिया रेड. अब जो कैलकुलेटर हम क्रिएट करें ना, ये कल वाले कैलकुलेटर से काफ़ी डिफरेंट है. वाई? बिकॉज इस कैलकुलेटर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करें. सही है, इस कैलकुलेटर के अंदर हम एक ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, जो ऑपरेटर्स अभी हमने सीखे थे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसमें ये साइन होती है, जिसके अंदर ये साइन होती है, जिसके अंदर ये साइन होती है. सो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड देन लेस देन एंड इक्वल टू, राइट? सो नाउ अब हम क्या करें, हमने सबसे पहले वही दो वेरिएबल्स क्रिएट किए. पहला वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया फ्लोट, हमने बता दिया पाइथन को ये फ्लोट है तो इसमें डेसिमल भी आ सकते हैं, इसमें इनपुट करना होगा. तो हम यूज़र को बोल रहे हैं कि एंटर द फर्स्ट वर्ड. फिर हमने बोला इसके बाद एक ऑपरेटर आएगा, ऑपरेटर इनपुट करना होगा. ये भी यूज़र खुद डालेगा, यूज़र को कौन सा ऑपरेटर चाहिए. सो एंटर एन ऑपरेटर. ऑपरेटर से मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सही है. और यू कैन ऑल्सो यूज़ द रिमाइंडर वाला ऑपरेटर, व्हाटएवर ऑपरेटर दैट यू वांट टू यूज़, राइट? So here you go. And then we want the user to use another input the second number. So अब ये कैसे हमने कैलकुलेटर बनाया है, सबसे पहले हमने यूज़ किया if स्टेटमेंट अप्लाई की, द ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस. सही है. देन प्रिंट नंबर वन वेरिएबल दिस प्लस वेरिएबल दिस. If the operator is equal to negative minus, then you subtract number 1 from number 2. Else if the operator is equal to multiply, then you multiply number 1 with number 2. Else if the operator is equal to divide, you divide number 1 by number 2. अच्छा, काफ़ी दफ़ा होता है कोई बंदे ने कोई नया ऑपरेटर डाल दिया, उन्होंने वहाँ लिख दिया ऑपरेटर की जगह बी या सी.
या डी, व्हाटएवर अल्फ़ाबेट लिख दिया किसी ने, क्योंकि आप तो यूज़र को नहीं रोक सकते ना भाई, यूज़र तो कुछ भी कर सकता है। जैसे आपने एक ऐप बनाई थी, उस ऐप का नाम था सिंपल कैलकुलेटर, राइट? वो ऐप के अंदर आपने ये दिया, तो इन दैट केस वी वांट टू प्रिंट इनवैलिड ऑपरेटर, सही है? So in case of if the person puts anything other than these operators, we're going to say else, just put an invalid operator, and this gives you a better calculator. Now let's run this calculator. So I'm going to stop sharing this, and मैं क्या करता हूँ, कोड आप लोगों से शेयर कर देता हूँ. Here you go. So the code is with you guys, and then I'm going to run this on the IDE as well. Here you go, PyCharm पे आ गए, सब clear किया. Now say मैंने सबसे पहले बनाया number, num1 is equals to input. Input के अंदर मैं क्या डालना चाहता हूँ, input के अंदर सॉरी num1 को सबसे पहले हम करेंगे float. Float के अंदर हम करेंगे basically input what, input enter number, and ये करके 35 डाला, and then we close this. यहाँ 35 डाला ताकि इसको पता चल जाए, जब भी ये ग्रीन में लगता है इसका मतलब ये पाइथन समझ गया ये स्ट्रिंग है. Then what we do is that we create an operator op, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं ऑपरेटर को, सही है? एंड वी से ऑपरेटर किस तरह से होगा, ऑपरेटर हम इस तरह से शो करेंगे कि इनपुट एंटर एन ऑपरेटर, सिंपल इनपुट नेक्स्ट होगा num2 इक्वल टू साइन, फिर भी हम चाहते हैं फ्लोट हो, इनपुट एंटर another number. ओके, अब हम डालेंगे इफ स्टेटमेंट्स. इफ, सही है? जैसे मैंने इफ लिखा, देखें द पाइथन recognizes as a command. op, which is the variable operator, double equal to the string, which is string क्या है हमारे पास, plus. In that case, what we want Python to do is we want to print num1 plus num2. फिर हम क्या करेंगे, elif operator is equals to minus num1 minus num2. elif operator is equals to multiply, print num1 multiply by num2. Else elif एक और आएगा, operator is equals to print num1 divided by num2. Else, अच्छा एक और चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, देखें जब भी इफ स्टेटमेंट्स आती है ना एल्स, ये रेड इसलिए आ रहा है बिकॉज मैं यहाँ पे कोलॉन्स नहीं लगा रहा. ये मुझे बता रहा है आईडी कि देखो यहाँ पे कोलॉन्स नहीं लगा रहे, आपको कोलॉन्स लगाने की जरूरत
else print invalid operator, क्योंकि ये string है तो मैं इसको right, and then I run the code. It runs. So I say 4 multiplied by operator. तो multiply की जब add कर देता हूँ. Just 1 minute please. Sorry about that. So we enter number 4, then we enter an operator plus, then we enter another number 9, enter आ गया 13. सही है. अब क्या है, अब ये हमारे पास बेटर कैलकुलेटर क्यों है, बिकॉज इसमें हम ऑपरेटर चेंज कर सकते हैं ना. यू गाइस कैन क्रिएट एज मेनी ऑपरेटर्स एज यू लाइक. You guys can apply sine, cos, theta, whatever you want to apply. कोई से भी function. You guys can create any calculator you like. Scientific calculator के अंदर भी यही inputs होती हैं basically. Now you guys have created your own calculator in essence. इसी console को we can convert into an app, and you have created your app of a calculator. Basically, if you're creating the app using Python, you have just created your calculator. So I'll just copy this, paste कर दिया आपके लिए ये. So you guys can run this, and say I run this again, and मैं check करने के लिए सिर्फ लिखता हूँ 70 enter divided by, divided नहीं सब लिखता हूँ g 23. गलत इनपुट कर दी ना, बिकॉज ये आपका यूजर भी तो कर सकता है. क्या बोलते हैं, इनवैलिड ऑपरेटर. अच्छा, दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड आई से 45, एंड आई से minus 0.10000. So yeah, so this is an idea on how to build a calculator. तो एक बात समझ लें आप, जब भी आप इफ़ या एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इस स्टेटमेंट के बाद आप अप्लाई करेंगे क्या, कोलॉन्स अप्लाई करेंगे, कोलॉन्स, क्योंकि कोलॉन्स के ज़रिए एग्जीक्यूट होते हैं. चाहे वो कोई फंक्शन भी अप्लाई करें, फंक्शंस भी अप्लाई करने के लिए आप पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे, DEF, and once you have defined the function, then you will tell us what the parameters of that function are. Parameters bracket में आएंगे, open and close करके, and ये जो हम जो लिखते हैं ब्रैकेट्स जो बनाते हैं, इसको कहते हैं calling the function. You call the function, and then उसके बाद हम डालेंगे colon की sign. That's it. So ये IDE हो गया है clear. Coming back to the presentation, so we are at 551, and so we just created a better calculator. I hope you guys enjoyed creating this calculator, and also doing the Kahoot. So मैंने share भी कर दिया आपसे ये presentations already. हमने आपसे full presentation share कर दी है, तो you guys can use that as well. Now, so tomorrow, so we are already at 5:52. Tomorrow, what we're going to do is that we're going to work with dictionaries. We're going to learn a new type of data. Data की arrangement जिसको बोलते हैं dictionaries. अभी तक हमने किया है list, हमने किया है tuples, सही है. हमने booleans कर लिए, हमने if statements वो सारे कर लिए. अब हम करेंगे dictionaries, फिर हम जाएंगे loops में. फिर हम गेम्स भी डेवलप कर पाएंगे, तो गेसिंग गेम एक डेवलप करेंगे. लूप्स क्या होते हैं, दे बेसिकली थिंक ऑफ अ लूप लाइक दिस, सही है. ये क्या करता है, आपने कोड यहाँ पे बनाया, वो कोड जो है ना लूप हो रहा है, रन हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है. इट कैन इवन रन इनडेफिनेटली, लाइक अ वाइल लूप कैन रन इनडेफिनेटली, और यू कैन असाइन कि भाई स्पेसिफिक अमाउंट तक रन करना है, सो देन स्पेसिफिक टाइम्स रन करना है, दैट्स अ फॉर लूप, एंड विल सी व्हाट दे आर. फिर उसके बाद हम 2 डायमेंशनल लिस्ट, विच आर बेसिकली
डेटा फ्रेम्स बनते ही इनसे, तो टू डायमेंशनल लिस्ट हम देखेंगे क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डेटा एरेज। डेटा एरेज। फिर हम एक अपना पूरा ट्रांसलेटर बनाएंगे कल, जैसे आज हमने एक अच्छा कैलकुलेटर बनाया है, हम एक अपना गेसिंग गेम डेवलप करेंगे। सो व्हाट्स द होमवर्क फॉर टुमारो? Homework for tomorrow is that I want you guys to build a better calculator than this, an even better calculator. I want you guys to, you know, create, defeat this. ये जो मैंने कोड आपसे शेयर किया ना, आई वांट यू टू क्रिएट अ कोड दैट इज इवन बेटर देन दिस। एक तो ये चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ। दूसरा, आई वांट यू गाइस टू लुक अप एंड गूगल पे एंड कम अप विद फंक्शंस इन फॉर हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के अंदर क्या क्या फंक्शंस अप्लाई हो सकते हैं, एंड शोकेस टू मी अ फंक्शन। सिंपल होना चाहिए उस फंक्शन को। हेल्थ केयर रजिस्ट्री का कोई फंक्शन निकाल लें आप। अगर हम कोई रजिस्ट्री बना रहे हैं, रजिस्ट्री से मतलब है हम कोई ईएमआर बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड पे कोई फंक्शन अप्लाई क्या हो सकता है, आप उसे जाके देखें ना, आपको मिलेंगे गूगल पे। सही है। सो या दैट्स अबाउट इट। सो एक होमवर्क आपका ये है कि creative Google up functions that can be applied in health, and then with that, build an even better calculator than this. That's it. फिर उसके बाद जब हम डे 3 पे आएंगे, फिर डे 3 पे हम ये सारी चीज़ें करेंगे, um, all the loops and dictionaries and everything. फिर उनको कंप्लीट करने के बाद फिर हम you'll go into exponent functions क्या होते हैं, फिर try and if statement, then कल ही के दिन हम we'll start to read files. So we'll first try to understand how files are read in Python, how files are written in Python, how we can write files in Python. और फिर जो डे 4 है हमारा, डे 4 will be focused on using packages. And so Python के जो package, why is Python so awesome? Why is it that everyone loves Python? Why is it that Python makes a novice programmer like me do stuff that I can only imagine? Why is it that someone with very novel, very easy programming skills such as myself can go and do machine learning? It is because Python makes it so easy. Why? Well, because first off, Python does one thing. Python has very simple syntax, which आपने एक दफ़ा सीख लिया हमारे साथ, that's it. So you know this. And then on top of that, what Python does is that Python has these packages. And ये packages जो है ना, ये game changer है Python के। इसमें कुछ packages ऐसे हैं जो visualizations के लिए यूज़ होते हैं, ये हम डे 4 पे करेंगे। कुछ packages ऐसे हैं जो data analysis के लिए यूज़ होते हैं, हम देखेंगे pandas क्या होते हैं। कुछ पैकेजेस ऐसे हैं जो इस्तेमाल होते हैं फॉर देयर आर अदर थिंग्स फॉर विजुअलाइजेशन, जैसे मैटप्लॉटलिब है एक पैकेज। इसी तरह से फिर पाइथन के अंदर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। द वेरी रीज़न वाई जावा वाज वेरी फेमस, बिकॉज जावा के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो सकती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली आप अपनी एक सेपरेट डेटा क्लास बना देते हैं, जिसमें इसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप अपना सेपरेट डेटा टाइप बना सकते हैं। अभी तक हमने जो डेटा टाइप्स डिस्कस की थी, पाइथन में हम एक अपनी डेटा टाइप्स बनाएंगे, हम दिखाएंगे कैसे हम वो डेटा टाइप बनाते हैं हमको। सो all of these things will help you guys in order to understand this. Day 4 will be tougher than day 3 and day 1. So सबसे हमारा easy होता है day 1, then होता है day 2 tougher, and then होता है उससे tough day 3, and then सबसे heaviest होता है day 4. बट सब कुछ आपको समझ में आएगा, इट डजंट मीन कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो वी आर डन विद द सेशन। लेट्स हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर। मैं आपसे ना सेशन इवैल्यूएशन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। आई वांट यू गाइस टू प्लीज फिल द सेशन इवैल्यूएशन। हियर यू गो। अगर आपने चैट में जाएंगे, आपको इस सेशन इवैल्यूएशन का लिंक मिला है, प्लीज़ ये सेशन इवैल्यूएशन फिल कर दीजिए। Thank you so much for that. Everyone needs to fill the session evaluation, because अगर आप ये session evaluation fill करते हैं, so it helps us in order to improve these sessions. आपने जो गलतियाँ बताई होती हैं, हम उसको use करते हैं in order to make these sessions better. Now we can open up for question and answer, so you guys can ask any question that you like. Please go ahead. Anything you do not understand, anything you would like to change, we are open to criticism. कोई मसले की बात नहीं है।
व्हाट मोर डू यू गाइस वांट? ऑब्वियसली ये बेसिक्स है पाइथन की, तो आपको सिर्फ सिंटैक्स समझाने में ही हम 2 से 3 दिन लगाते हैं। एंड देन पैकेजेस तो फिर बहुत आसान है रन करना। बिल्कुल इस तरह से कि अगर आप में से किसी ने कभी भी डेटा एनालिसिस की हो तो आपको पता चलेगा सबसे मुश्किल काम जो है ना डेटा क्लीनिंग होता है। एंड वंस यू हैव क्लीन द डेटा, वंस यू हैव डेटा मैनेज द डेटा मतलब आपने वो वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए जो आपको चाहिए, देन डेटा एनालिसिस तो बहुत इट टेक्स नो मोर देन 5 minutes, बिकॉज आपने यू हैव टू जस्ट डू इट ऑन अ क्लिक। सिमिलरली पाइथन के पैकेजेस भी आपको क्लिक वाला ऑप्शन देते हैं, बिकॉज पाइथन पैकेजेस they can be applied on data sets. Python packages can be applied on machine learning. Python packages can be applied in data visualization. Python packages can be applied in computer vision. आप ये अज्यूम करें ना कि भाई देखिए पाइथन बिग डेटा पे अप्लाई होता है, सही है। बिग डेटा मतलब एक ऐसा डेटा जो वेरिएबल से भी आ सकता है, जो विजुअल डेटा भी हो सकता है, जो ऑडियो डेटा भी हो सकता है। Imagine करें I'm trying to draw an inference based on so different data types, जिसमें ऑडियो डेटा भी है, विजुअल डेटा भी है, वेरिएबल्स का डेटा भी है, जिसमें न्यूमेरिक भी है, जिसके स्ट्रिंग्स भी हैं, and I'm able to use that data and come up with inferences. That's the power of Python. And I'm able to do that real time. तो जैसे डेटा आ रहा है वैसे ही मैं करते जा रहा हूँ। Those are some of the powerful things that Python gave you. एंड जैसे अभी आपने जो फंक्शंस देखे हैं, आप गूगल करेंगे फंक्शंस, इट्स अ होल वर्ल्ड इन इटसेल्फ। ये जितनी जो पैकेजेस हैं, इन पैकेजेस में कितने हज़ारों फंक्शंस होते हैं। जैसे पैंडास को अगर आप रन करेंगे, कितने पैंडास के कितने सारे डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। सो ओके, सो आपके पास दो टेक होम असाइनमेंट्स हैं। सबसे पहला ये दैट यू हैव टू बिल्ड अ कैलकुलेटर, an even better one than what we showed you guys, सही है। एंड दूसरा आइडेंटिफाई फंक्शंस फॉर हेल्थ केयर। आपको नहीं भी मिलता कोई बात नहीं, आप गूगल करें कि कौन कौन हेल्थ केयर में फंक्शंस कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। फंक्शंस मतलब पाइथन फंक्शंस कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, ये मैंने आपकी चैट बॉक्स में भी लिख दिया आप सबके लिए। सो दिस इज़ योर टेक होम असाइनमेंट। प्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी शेयर कर दी है विद ऑन द गूगल on the Google Drive. Asif bhai, I'll just share the, I've already shared the link of Google Drive with you. उसके ऊपर हमारी presentation of all 4 days पड़ी है। आप लोग जाके चारों दिन की प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। मज़े की बात है, हमारी जो प्रेजेंटेशन हम आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, those presentations are in PowerPoint. You can even use that to teach anyone you like. So हमने तो इतना open रखा हुआ है। So I hope this helps everyone. I hope you guys are able to teach others as well. We don't want this information just to be with me. I want this information कि आप सीखें और सिखाएं आगे जाके लोगों को। Conduct these kind of sessions in your own departments. In order to change healthcare, we need to teach health professionals in how to become data scientists. We need to teach healthcare professionals on how to become data analysts, how to use data, and that only happens, and how to apply artificial intelligence and machine learning. That will only happen when healthcare professionals themselves know how to work with Python. And you guys will form the core group in AKU, inshallah. And AQ and also in Pakistan, because मुझे पता है पाकिस्तान में healthcare में Python फिलहाल इस level पे कोई नहीं सिखा रहा है. So that is one of the reasons why we want to teach you guys, and also we are giving you this presentation. Go and teach anyone you like. It's all for free. So you don't even require permission from me for that. So if मेरी रिक्वेस्ट ये कि आप सब प्लीज़ वो फॉर्म फिल कर लीजिए, self evaluation form for session evaluation form for today. Please evaluate today's session, which is day 2 of Python Basics workshop, and then you guys can just leave. Thank you, Dr. Amar. So if you have completed, you can just leave. If you have any question, you can ask question. Otherwise, if you want to leave, you can leave. No issues. Thank you, Wasi. श्योर वो सेम गूगल आपसे जो हमने आपको ईमेल भेजी है ना,
उसी के ऊपर वो गूगल ड्राइव का लिंक है, आप सिर्फ ईमेल खोल के देख लीजिए। वरना वो जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमने वो लिंक शेयर किया है गूगल ड्राइव का। आई होप ऑल ऑफ यू हैव जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो यू गाइस कैन चेक आउट दैट लिंक फ्रॉम द व्हाट्सएप ग्रुप। हमने कल भी शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। मैं दोबारा आज ये ईमेल के ऊपर, ईमेल ऑलरेडी हमने आपसे शेयर की हुई है। आज हम ईमेल करेंगे तो ईमेल के अंदर आपको सेशन की वीडियो जब शेयर करेंगे तो वो थ्रू गूगल ड्राइव ही शेयर करेंगे, तो वो उसमें सारे लिंक्स आ जाएंगे आपके पास। इज जस्ट अ सिंगल गूगल ड्राइव, उसको ओपन करेंगे, उसमें हमने जो दिसंबर में कोर्स कराया था वो भी पूरा पड़ा हुआ है। सो यू गाइस कैन डाउनलोड दैट एज वेल एंड यू गाइस कैन शेयर इट एनीवेयर यू लाइक। सो सही है, तो गूगल ड्राइव का लिंक हम दोबारा आपसे शेयर कर देंगे। सो आई एम लीविंग गाइस, आई होप देयर इज नो क्वेश्चन, नो पेंडिंग क्वेश्चन। So let's just conclude today's session. Thank you so much. Allah Hafiz and take care.